provided in the different training modules. So auction is the unserviceable items after fulfillment of codal formalities. So there are two things that we have to identify: the unserviceable items, and we have to complete the codal formalities. Likewise, the second important thing is a public sale in which goods or property are sold to the highest bidder. So in total, there are 3 points. First of all, as per this definition, as per this clarification, we have to identify the unserviceable items, which is available in the college, because we are discussing directly the assets of the college. And likewise, which are the codal formalities we should know, and how to complete these codal formalities. And if we have complete these formalities, the most important thing is that the highest bidder is eligible to purchase the items which are available for auction. In tender, we pursue the case of the lowest rate, and in auction, we pursue the case for highest rate. So these are the rules. Delegation of Financial Power Rules 2016. This is a book available online as well as available in hardship. I think it can be seen in the college library, and I think it should be available in the colleges as well. So it is a very common book, and this book was published by Finance Department in 2016, and accordingly it was implemented in 2016 and 17. In this book, we can see each and every activity related to development and non-development budget, which is required to be exercised by the category 1 officer or category 2 officer or category 3 and category 4 officers. So they categorize the officers and their powers, and accordingly all detail is available. However, if we want further clarification about these rules, we have to submit a reference to the finance department. They guide different departments in different times. They issue different advices. Advices are also available. Their explanations are available, how to exercise these rules. But our topic is very simple, and the rules related to my topic is also very simple. So page 13 of this book has the same rule, that is rule 12: powers to sell surplus or unserviceable vehicles, machinery, equipment, spares, stores, stocks by auction by the disposal committee. So items are available, uh, disposal committee is required to be notified, and unserviceable items as well as vehicles and different requirements it should be completed, because if the serviceable item is available and we include it in for auction, that is again a audit para, that is again a violation of rules. So the most important thing is that we have to decide that this item is unserviceable. ये काबिल इस्तेमाल नहीं है, ये हमने फैसला करना है. So as per this rule, administrative department means higher education department has full power. No limitations whatsoever the condition is, whatsoever the financial limit is. Administrative department can auction any item of highest limit, but for category 2 and 3 there are limits. For category 1, again full powers. Director of Education Colleges is the category 1 officer, but principals of the colleges as per this book are category 2 officers having the power of 1 million at a time. It means if you want to auction a material and items of the college which are unserviceable, so the base price, the reserve price should not be more than 1 million. यानी 10 लाख से ज्यादा की अमाउंट नहीं होनी चाहिए at a time. But you can divide it like
In first phase, you can auction the furniture. In the second phase, you can auction the plant and machinery. In the third phase, you can auction the unserviceable buses and vehicles, other vehicles. So at a time, the limit of amount is 1 million. Likewise, if the officer is grade 18 and category 3, he or she can auction the items having the cost of 0.250 million. It means 2,50,000, यानी 2,50,000 तक ये अख्तियार है ग्रेड 18 के ऑफिसर्स का. ग्रेड 19 के हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं और 20 के भी जो इवन प्रिंसिपल्स हैं, they are category 2 officers. So disposal committee is required to be notified. As per this slide, the first important thing is that we should know that what are the rules. So delegation of financial power rules 2016 is the book. Second, rule 12 is related to the auction process. Third, which category is available and which category of officer is trying to auction the items. So category 1 is related to the director of education colleges, and likewise category 2 is the principal of the colleges. So disposal committee, officer in category 1 of concerned department chairman, a member of S&GAD BS 18, a member of FD BS 18 member. This is a disposal committee. In category 2, accordingly, the chairman will be category 2 officer in disposal committee. If the category 3, accordingly, the chairman of the committee will be category 3 officer, and member of S&GAD and member of FD will be the member. They are notified. S&GAD has notified their members. FD has notified their members. So I will share later that who will join our committee. So as per this slide, there are 3 important things. That rule 12 is related to my rule. I should know what is my category and what is the composition of disposal committee. So composition of disposal committee is that there are 3 members. 1 is the chairman and 2 are the members. The chairman is the relevant office like principal, like secretary, like additional secretary, and 2 members, 1 from S&GD and 1 from FD is available. Process. The first important thing that we have to arrange the delegation of financial power rules 2016. We should know that book should be available at that time. Throughout the process, that book should be with the chairman, because that is the major part. That is the basic rule under which you are authorized to auction the items. The second important thing of the process is that we have to identify the unserviceable items. So for that purpose, we need to constitute an auction committee in the college. I will share later that why it is required, but at this stage, it should be clear that identification of unserviceable items cannot be made by the principal itself, cannot made by the head clerk itself. It should be made by a senior professors committee from the college, maybe the vice principal, maybe the head, maybe any head of the department, maybe the head. So 3 or 4 senior members of the college, maybe a member of college council or any other office, any other senior officer, they will identify the unserviceable items. They will open the stores available in the college, whether these stores are available in the departments, whether there is a combined store, whether the unserviceable items are scattered in different areas. So this committee will see all stores, all areas where the unserviceable items are available. These availables can be in college. Walaikum assalam. किस स्लाइड पे हैं आप अभी सर? Slide 5. Okay, sir. Continue, please, sir. Okay. So the items could be furniture, plant and machinery, IT equipments, lab equipments, store items, trees, transport,
sports items, crockery, and other items. Major items I have identified, and major items are being reflected over here, but other items can cover the some miscellaneous items. For trees and transport, I will discuss later on, because for trees and auction of trees and transport, there is a separate mechanism. So I will share another slide based on the process. This is the process for furniture, plant and machinery, IT, lab equipment, stores, sports items, crockery, and other items, not for trees and transport. Okay. In plant and machinery, uh, all important items are included, like fridge, freezers, photocopy machine, uh, fans, ceiling fans or pedestal fans, water coolers, dispensers. These are the items of plant and machinery. IT equipments are clear: computers, laptop, printers, scanners. Lab equipments are clear, available in the labs. Store items like old tires, tubes, batteries, and other miscellaneous items available in stores. Like if you will see that in the stores we have some papers, like the old papers of the examination center of the college, of the controller of examination office. They have their own old papers material that is also available. So likewise, some old files, file covers, folders, they can be available over there. So sports items, crockery, if the hostel is available, if in the college there is a crockery. So in offices we have crockery. So crockery items and other miscellaneous items. So these items are required to be seen by the auction committee, which is required to be notified by the colleges, and then this auction committee will prepare a list of items, and these items will be shared with the disposal committee, because they have to reserve a base price of those items, which will be a starting point for calling of rates from the vendors. So for the starting points, we have to, the chairman of the committee have to, the respective and concerned institute have to uh, reserve the price. Can you hear me? Yes, sir. You are audible, sir. Okay. Thank you. Okay. The next is repair of furniture and some other items. So when you will identify the unserviceable items, you will see some items can be repaired. So those who are available in the stores, but that can be repaired, that can be used, that is not a properly unserviceable items, but that was placed in the stores due to some minor problem, like a chair without one arm, a chair without one leg, a chair without cushion. That can be repaired, that can be uh, that can be converted into a serviceable items, like different items. Mostly the furniture can be repaired. Most of the time the furniture can be repaired and can be used. So during this process, when the identification of unserviceable items being started by the committee, you can see that some items can be repaired and can be reused for the college activities. That is again important for us, because any serviceable item cannot be included in the auction process. Next, placement of items at a place where each and every item can be observed by the vendors. So these items are required to be collected and placed at one at a place where it can be seen, like in a hall, in a ground, wherever you can see, you can place those items, because the security of items is also very important. And so you have to place these items in the area, in the location where
vendors can go and see each and every item, because on the basis of their observation, they will participate in the rates. They will calculate the amount at their own, and then definitely for their business, and then they will start calling their rates that this is their offer rate. If they will not see any item, then it will be difficult for them. The next is advertisement in the newspaper, placement of notice in the college premises, maybe on the notice board or on the college main gate. And the third, contact with the vendors personally. The last one is important uh, for most of the items, not for the transport. For the transport, it is mandatory to place advertisement in the newspaper. For rest of the items, you have the choice to uh, to provide a publication in the newspaper, or to use a notice on the main gate. But the last one is important: contact with vendors personally. This activity is being done by the different head of the institution, because the vendors which are involved in the purchasing of old materials, they are available in different areas. They don't, most of the time they don't want to see the PEPRA website where tenders are available, where tender notice are available, and they don't see the newspapers. But some of them are well aware of these things. But most of time, I observe that we have to contact these vendors personally, because they are available in their stores, and then we can inform that we have the material. You have to participate in our process. They know the process, but they are not they are not connected with newspapers as well as on the paper websites. So we have to, this is the most successful way to connect these vendors on personal level. And 5, 10, 12, whatsoever the number is, call them, inform them that we are going to auction some items. Then they visit and they see the items and then participate on the relevant date. Principal of the college is the category 2 officer. Page 5 of the delegation of financial power rules can be seen. In these pages, the designation of the officers have been given of the different departments. So principal of the college is included at page 5. You can see it. Powers of category 2 officers is rupees 1 million, which is already shared with you at a time. At a time means for one auction. So you can do 3 auctions in a year, 2 auctions in a year, 4 auctions in a year. There is no limit, but limit for one auction is 1 million, यानी 10 लाख तक आप एक auction को कर सकते हैं. 10 लाख से मुराद है वो जो बेस प्राइस डिस्पोजल कमेटी उसके लिए रिजर्व करती है. These are the committees. 1, college auction committee. This is not available in the delegation of financial power rules. In financial power rules, only the disposal committee is available. This is basically my requirement. This is the requirement of the colleges, that we need to notify an auction committee, and this is the practice in the colleges. You know, you are the senior most officers of HET, you know it. This is not a new thing for you. So the college auction committee properly notified the college auction committee with TORs. TORs of the committee should be clearly mentioned, and the TOR of the committees are, this can be the TOR of the committee, but not limited to these points. It can be more than these points. These are the major points: identification of items, placement at appropriate place means that placement of items at the appropriate place, categorization of items, furniture, plant and machinery, store items, IT items, lab equipments, crockery, categorization of items, segregation of items, then serviceable and unserviceable, and base work for disposal committee. This is a base work for disposal committee, because when the disposal committee will visit, then all unserviceable items will be available at one place with segregated portions, like
in one corner of the hall or maybe the room, there would be a furniture, and then the next there would be IT items, and next there would be other items, and accordingly. So categorization and segregation of items can easily be seen. Then list of segregated items. All unserviceable items will be counted through lists. This is a base work for disposal committee. And accordingly, this will be helpful for the vendor. Vendor will see that how much furniture items are available, like 100 chairs are available, 200 benches are available, 50 tables are available, 30 computer tables are available, and if beds are available, if the hostel is available over there, and like other things. So accordingly, the list of other items and other items, there will be a combined list with segregation. This will be a base work for the disposal committee, and then disposal committee will visit the site. The next important TOR of the committee is to initiate the process of auction. So process of auction is that the contact with the vendors and identification of unserviceable items. This is the initiation process of auction. Then next is appropriate place, then categorization, then segregation, and then list. And the next important task and the TOR of the committee is that to assist the disposal committee till completion of the task. So the auction committee of the college will assist the disposal committee till the final disposal of the items, because they do the base work. They know where these items are available. They are the custodian of these items, because senior most uh, officer of the college, and accordingly the shifting of these items, they will help in the shifting of these items accordingly, for security and for visit of the committee, for visit of the vendors. So this committee is basically for the assistance of disposal committee, and most of the work is being done by this committee, and the disposal committee will see and reserve the price. Next slide is the disposal committee. Principal of the college is the head of the disposal committee. Nomination of S&GD, additional deputy commissioner general of each district is notified as member of S&GD by S&GD in 2017. There is a notification. This notification should be available with each and every principal of the college. I have the copy. I can share it. So this is very important document. This nomination was made by S&GD. So additional deputy commissioner general of each district is the member of the auction disposal committee for the auction uh, for the entire district. If the school education will uh, notify disposal committee, the same member will join. For the college committee, the same member. For all other committees. So for the entire district, this is one nominated representative of S&GD. The next is the nominated member of FD, Finance Department, Deputy Director, Local Fund Audit of the concerned district. For each district, again in 2017, this notification has been made by Finance Department that Deputy Director Local Fund Audit will be the member of Disposal Committee on behalf of Finance Department in each district. So the first important task of the principal is that they should coordinate with these two members. Most of the time, these members nominate further members to join on behalf of additional deputy commissioner and on behalf of deputy director, local fund audit. But to contact these persons is very important, and for that purpose, you have to the copy of these two notifications, which were issued by S&GD as well as by the FD, because it was notified in 2017, and then they will join your process of auction. Next, when you will coordinate with these officers, then notification of the committee will be issued by the principal.
auction committee will be notified, and then disposal committee will be notified. You have the copy of notification signed and stamped. प्रिंसिपल साहब को ये कमेटी नोटिफाई करनी पड़ेगी. ये वैसे नहीं है ना, ऑक्शन कमेटी वैसे है ना ये है. We have to notify. Then visit of the store room. This disposal committee will visit the store room and then reserve the base price. As I earlier mentioned in the last slide, that auction committee has complete the base work of the auction. Now items are available. They are segregated. They are available in one place at one place, and it can be seen by the vendors, by the disposal committee. So the disposal committee will visit and reserve the base price. ये एक बहुत अहम तरीन काम है. याद रखिएगा कि जब आप रेट उसका कोई मुकर्रर कर रहे हैं कि ये जो मेरा सामान है ये 5 लाख का है या 4 लाख का है, you should be very much careful about for this figure, because this figure will be checked by the audit officer at the time of audit on the basis of the list provided by auction committee, signed and stamped by the auction committee. He will see the list and then the reserve price of your committee. No doubt, member of FD is available in this committee, member of S&GD is available. We are safe, but to reserve the base price is the most important work, and principal being the custodian of those items should be very careful, should be possessive. हमें कम कीमत नहीं लगानी चाहिए. अगर आप वहाँ फाइनेंस का या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का मेंबर कह रहा है कि इसके कम रेट लगाया जाए, आपको कोशिश करनी चाहिए, आप उनको कन्विंस करें कि जी इसके ज्यादा पैसे लगाएं. ये पैसे कौमी खजाने में जाने हैं, कॉलेज ने अपने पास नहीं रखने, बट ये सरकार की आइटम्स हैं, इनके हम कस्टोडियन हैं, ये मैक्सिमम रेट पे बिकने चाहिए. जैसे हम घर का सामान बेचते हैं, जब हम घर का सामान बेचने लगते हैं हमारी यही कोशिश होती है कि बहुत अच्छा रेट मिल जाए. तो so like that, so reserve the base price very carefully and properly. No doubt members are available, they will assist, and auction committee की राय भी उसमें ले लें. उसकी वजह यह है कि auction committee ने एक एक आइटम को अलहदा करवाया होता है, उनको मालूम होता है कौन सा आइटम किस पोजीशन में है. खास तौर पर जब आप फर्नीचर की बात कर रहे होते हैं या ओल्ड मटेरियल की बात कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत अच्छी चीज मौजूद होती है. पुरानी लकड़ी के सॉरी पुरानी लकड़ी के जो बेड्स हैं, जो चेयर्स हैं, जो सोफाज हैं, जो टेबल्स हैं, वो बहुत अच्छी हालत की होती हैं. उनको पॉलिश करवा के बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है. जो वक्त गुजरता जा रहा है, क्वालिटी आपको पता है आइटम्स की वो उसमें डाउनफॉल आ रहा है. सो ओल्ड नजर तो अच्छा नहीं आ रहा होता, वो तो मट्टी पड़ी होती है और टूटा फूटा नजर आ रहा होता है, बट वो अपनी क्वालिटी में बहुत अच्छा होता है. सो मैंने इस पॉइंट पे जरा ज्यादा टाइम इसलिए लगा लिया. सो रिजर्व द बेस प्राइस केयरफुली बिकॉज वी आर कस्टोडियन ऑफ दीज आइटम्स. देन मीटिंग ऑफ ऑक्शन कमेटी एंड वेंडर्स. सो ऑक्शन कमेटी वेंडर्स को कॉल करे और उनको बुलाए कि जनाब आप आए और ये हमारा सामान देखें. नॉट द डिस्पोजल कमेटी, ऑक्शन कमेटी की बात हो रही है. अभी ऑक्शन कमेटी वेंडर्स को पहले बुलाएगी और उनको पहले सामान दिखाएगी और उनको बता देगी कि हमने इसकी एक बेस प्राइस मुकर्रर कर रखी है, आप देखें और आप हमारी मीटिंग के लिए आए, हम आपको मीटिंग के लिए डेट देंगे. जब वो वेंडर इसको देख लें, देन यू विल डिसाइड अ मीटिंग फॉर डिस्पोजल कमेटी. So disposal committee will call a meeting after the visit of the vendors, and then this meeting will be you can say notified. You will issue the meeting notice and share with those vendors, the interested vendors. So whatsoever your process is, if you contact personally, then you will provide them personally. If you are contact with on phone, you will provide on phone. Whatsoever the mean of communication is, you have to inform all important and interested vendors to participate. जितने ज्यादा वेंडर होंगे उतना बेहतर रेट आएगा, कंपटीशन अच्छा आएगा. Then you will prepare attendance sheets. 2 attendance sheets will be prepared for this meeting. One for disposal committee and one for the vendors. ये एक नहीं होती, ये attendance sheets separate होती. ये भी याद रखिएगा
ये आपने अलग-अलग अटेंडेंस शीट्स बनानी है, और जो अटेंडेंस शीट आप बना रहे हैं वेंडर की, उसके अंदर डिटेल ले लें, उसका नाम क्या है, वो उसके स्टोर का नाम क्या है, वो उसका एड्रेस क्या है, और वो उसका फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका लैंडलाइन नंबर अगर अवेलेबल है तो क्या है, और उसके अलावा आप उसके साइन सिग्नेचर वहां ले लें, ठीक है। और वो उससे पूछें कि वो खुद ओनर है उस ओल्ड स्टोर का, या वो ऑन बिहाफ ऑफ ओनर आया है, तो वो लिख देगा कि रिप्रेजेंटेटिव फलां फर्म, या रिप्रेजेंटेटिव फलां स्टोर, या रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर फलां, नाम भी वो बता सकता है। सो इन एनी केस एक डिटेल अटेंडेंस शीट हो, जो बाद में ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने हायर एजुकेशन को इन 1999 ज्वाइन किया था एज ए सेक्शन ऑफिसर, and then I served in higher education till 2019. मैं और भी डिपार्टमेंट्स में रहा, स्कूल एजुकेशन में भी रहा, आजकल वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। बहुत सारे ऑडिट पैराज देखे, बहुत सारे ऑडिट मीटिंग्स अटेंड की, खुद कुछ मीटिंग्स को भी चेयर किया। ये मैं ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। जब भी आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात कर रहे होंगे, आप ऑडिट को माइनस नहीं कर सकते, आपको ऑडिट को ही सामने रख के बात करनी है। तो मैंने अब तक जितनी बातें की हैं, ये सारी की सारी ऑडिट को सामने रख के की हैं, क्योंकि आपका ये प्रोसेस ऑडिट ने ऑब्जर्व कर, ऑडिट ने ऑक्शन का पूरा प्रोसेस देख के बताना है कि ऑक्शन ठीक हुई है नहीं हुई, और उसके बाद ऑडिट पैरा बन जाता है। तो ऑडिट पैरा फिर लटके रहते हैं, और फिर प्रिंसिपल्स उसमें मुसीबत में पड़े रहते हैं, आपको पता है, आप उसको बहुत बेहतर जानते हैं। तो when it is being checked by a third party, when an auditor will come and see my documents, then I should be very careful. So for that purpose, two attendance sheet will be prepared by the principal, by the disposal committee, by the auction committee, one for vendors and one for the disposal committee. Then start calling the offer rate by vendors one by one. So after the attendance, the chairman of the disposal committee will open the house and ask the vendor to share their rates. And they know the baseline price. Say you reserve the price 1 lakh. So the calling of rate will be start from 1 lakh 1,000. Then you will wait in few seconds, second will call 1 lakh 2,000. Then next 3,000, next 10,000. One jump, कोई अचानक एक jump लेगा दरमियान में. Then the first one will call 1 lakh 12,000. So this will continue till the last offer. Say it was closed on 1 lakh 40,000. So then you will say 1, 2, 3. Final call of the offer rate 1, 2, 3. You will see 1 lakh 40,001, 1 lakh 40,002, 1 lakh 40,003. Then the calling off rate will be closed. So if during 1, 2, 3 another offer will come, then again you will see 1 lakh 42,001, 1 lakh 42,002. Again a new person say 1 lakh 144. So you will continue this process till the final call. So when it will be closed with 1, 2, 3, then all rest of the vendors will leave the committee room. They have already signed and provided their basic information in the attendance sheets. They will leave the meeting room. The person who was the highest in bid will remain in the committee room, and rest of the matter will be discussed with them. The rest of the matter is that uh, he will provide the cash immediately और विद इन 1 आवर। वो कह सकता है कि जी मेरे पास 1 लाख है, 40,000 मैं आपको अभी मंगवा देता हूँ, तो आप कहेंगे जी ठीक है ले आइए, और वो 1 घंटे में 2 घंटे में ले आएगा, एंड देन यू विल रिसीव द कैश, डिस्पोजल कमेटी विल रिसीव द कैश, एंड नाउ आइटम विल बी हैंडेड ओवर टू द वेंडर। तो वेंडर 1-2 दिन लगाता है, वो अपना कोई व्हीकल लेके आएगा, फिर उसको लोडिंग स्टार्ट करेगा, ज़ाहिर बाज़ औक़ात मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होता है, 1-2 दिन में जाता रहता है, तो वो आपने साथ साथ उसको देखते रहना है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जब वो अपने आइटम्स उठा रहा होता है,
तो ऑक्शन कमेटी का कोई एक मेंबर या किसी और को भी प्रिंसिपल नॉमिनेट कर सकते हैं कि वो सुपरवाइज करता रहे, कि वो को और चीजें उसके साथ साथ ना उठा ले, वो उतनी चीजें उठाएगा जितने के उसने पैसे दिए हैं। और कॉलेज में तो बेतहाशा चीजें ओपन एयर में पड़ी होती हैं, तो कोई ऐसी चीज ना हो कि जो रात को आया करे और कोई और चीजें उठा के ले जाए। जो भी टाइम आप उसके साथ तय कर रहे हैं, यही मैंने कहा था कि he will remain in the remain present in the meeting room and rest of the matters will be discussed। तो ये rest of the matters है कि आप हमें पैसे दें, आप हमारा आइटम्स कब उठाएंगे, कब कौन आएगा, कौन हमारी तरफ से सुपरवाइज करेगा, और कब तक ये आइटम्स यहाँ से उठा के ये ले जाएंगे। ये जो शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स है, ये भी एक केयरफुल काम है, ये भी एक केयरफुल काम है जिसको आपने एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ इसको आपने कंप्लीट करना है। एनी हाउ, सो अटेंडेंस शीट्स, start calling the offer rates by vendor one by one, then final call of the offer rate 1 2 3, and timeline for shifting of items again ये discuss हो चुका, and receiving of cash and deposit in government treasury। ये deposit of government treasury वाला रह गया हुआ था, तो आपने 32A चालान के ऊपर, ये बड़ा मशहूर चालान है, चालान फॉर्म है हमारा जिसको हम 32A चालान कहते हैं, उसके ऊपर अमाउंट आप लिखिए और नेशनल बैंक में जमा करवा दीजिए, या नेशनल बैंक की ब्रांच नहीं है तो दूसरी किसी ब्रांच में जमा करवा दीजिए। सो इमीडिएटली दिस कैश इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। This is basically the process of the disposal of items. So you see that base work has been done by the auction committee, final work has been done by the disposal committee, and in collaboration with auction committee the process has been completed। कहीं भी ऑक्शन कमेटी बाहर नहीं गई, और डिस्पोजल कमेटी ने जब फाइनल डिसीजन लिया तो उसके बाद ऑक्शन कमेटी उनके साथ रही है, आइटम को शिफ्ट करने में भी रही है, और कैश को डिपॉजिट करने में भी उसने सपोर्ट किया, और उसने अपने हेल्प की है, और कैश रिसीव भी किया है। वो जो उसको आपने रिसीविंग देनी है कैश की, वो भी आपने उसको एक वाइट पेज के ऊपर देनी है, उसके पास भी रिसीविंग होनी चाहिए, वो भी अपनी रिसीविंग लेके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप उसको आइटम्स दे देंगे। जब वो आइटम्स आप देते हैं तो आप अपनी लिस्ट साथ रखते हैं, और फिर लिस्ट साथ रख के उसकी शिफ्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। नाउ द डिस्कशन इज ऑक्शन ऑफ ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट। जो अभी तक डिस्कशन हुई है ये विदाउट ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट थी। अगर आप ट्रीज और ट्रांसपोर्ट को ऑक्शन करने लगे हैं तो देन इट इज द बेसिक यू कैन से responsibility of the auction committee that they will inform, the committee will inform that the auction will be done in two parts, one with trees and transport, and the second one is rest of all items, furniture, plant and machinery, lab equipment, store items, IT items, miscellaneous items, they can be auctioned in one go, but trees and transport cannot be merged with that process because there are some other mandatory requirements to complete the process. So let's start with the trees, auction of trees. The rest of the work is the same. So before starting this point, again for trees, the same auction committee will identify the old trees, the trees which are required to be removed, कि वो डेंजरस हैं, बिल्डिंग पे गिर जाएंगे, या ऑलरेडी गिरे हुए हैं, या ऑलरेडी वो ड्राई हो चुके हुए हैं, तो वो भी अनसर्विसेबल हो गए। सो दे विल आइडेंटिफाई नंबर ऑफ ट्रीज where these trees are available, where these trees are available in the college or available outside the college, like with boundary walls, with main gate, available with hostel, available with college ground। कॉलेज के डिफरेंट कैंपसेस होते हैं, हर जगह डिफरेंट कॉलेज के एनवायरनमेंट है, डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, डिफरेंट उसके पार्ट्स हैं, तो वो जहां जहां भी हैं, सो दे विल आइडेंटिफाई एंड मेक अ लिस्ट, और बताएंगे बकायदा कि ये जो 10 ट्रीज हैं ये हॉस्टल के प्रेमिसेस में मौजूद हैं, ये 5 ट्रीज कॉलेज की मेन बिल्डिंग के साथ हैं, ये 6 ट्रीज बाउंड्री वॉल वाले हैं, ये फलां वाले हैं, ये ग्राउंड वाले हैं, वगैरह वगैरह। So they will make a list of trees, unserviceable item की identification हो रही है, so they will make a list of trees. Then after the identification and preparation of list of trees, the principal of the college will write a letter to the district forest officer
will write a letter to district forest officer to visit the college for the, you can say, the inspection of those trees. अब जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर विजिट करेगा या उनकी टीम आएगी, they will decide the base price of those trees. अब डिस्पोजल कमेटी में S&GD का आदमी भी मौजूद है, फाइनेंस का आदमी भी मौजूद है. अब इस बेस प्राइस में S&GD और फाइनेंस वाला मौजूद नहीं है. इस प्रोसेस में द रिजर्व प्राइस provided by the forest department will be the final. No one will change because they are authorized to auction the trees. आपने अक्सर देखा होगा कि कॉलेज के प्रिंसिपल्स के बारे में जो शिकायत आती हैं और जो अनोनिमस कंप्लेंट्स हों या रियल कंप्लेंट्स हों, उसमें ट्रीज का बहुत जिक्र होता है कि जी कॉलेज के ट्रीज जो थे वो प्रिंसिपल साहब बेच के खा गए हैं और ये कर गए और वो कर गए. उसकी रीजन ये है कि अगर तो उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं था और कॉलेज के प्रिंसिपल ने डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स के तहत कंप्लीट किया है प्रोसेस ऑक्शन का, डिस्पोजल कमेटी को भी बिठाया है और ऑक्शन कमेटी को भी बिठाया, सब कुछ किया है, बट दैट प्रोसेस वाज नॉट कंप्लीटेड. वैसे तो डिस्पोजल कमेटी में S&GD के और फाइनेंस के लोग कह देंगे कि जनाब इसके लिए फॉरेस्ट से आपने रेट लेने थे, आपने रेट लिए, बात तो वहीं खत्म हो जाएगी. बट अगर आपने कॉलेज की ऑक्शन कमेटी के तहत ही दरख्त बेच दिए हैं, you can't even sell a one chair without the disposal committee, and in the disposal committee only one principal is available, no other member of the college is available, two members are outside from the college. So we see that in different ordered paras that the college auction committee has auctioned the items and there was no disposal committee notified by the college principal. So this is very important that disposal committee, including two members outside from the college, they are authorized to dispose of the material. They are authorized. Otherwise, college auction committee just complete the base work. तो हमें कॉलेज की ऑक्शन कमेटी को ऑक्शन फाइनल करने के लिए यूज नहीं करना, ये ज़हन में रख लीजिएगा. Then visit of the forest team, reserve the base price and forest department as member. अब forest department को आप trees में as a member भी include करेंगे. अब कमेटी जो notify होगी वही additional deputy commissioner general, deputy director local fund audit and then one representative of the forest department. He or she will also attend the auction process. अब उसमें सारा फोकस ऑक्शन में फॉरेस्ट वाले पे ही होता है, सब उसी से पूछ रहे होते हैं. और ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो ट्रीज को आके मेजर करते हैं, उसकी ट्रंक को मेजर करते हैं, उसकी ट्रंक को मेजर करने के बाद और उसकी लेंथ को मेजर करने के बाद वो उसकी प्राइस को लॉक करते हैं और उनको पता होता है कि इसकी इतनी प्राइस मौजूद होनी है. और उनकी प्राइस जो है वो नियर टू रियलिटी होती है क्योंकि उनको पता है कि इस वुड की क्वालिटी क्या है और ये वुड कहाँ कहाँ यूज होना है. और चूंकि ये पुराना दरख्त है, डेफिनेटली के दरख्त ने अपनी उम्र पूरी करनी है खास टाइम के बाद, अनटिल अनलेस कि एक्सीडेंटली वो टूट गया हो या गिर गया हो आंधी की वजह से, अदरवाइज तो वो अपने टाइम पे पूरा करता है. तो जब वो पूरा करता है तो वुड की क्वालिटी हाईएस्ट लेवल पे होती है फॉर फर्नीचर या फॉर डोर्स या जहाँ भी हम घरों में यूज करते हैं. सो उस हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ वुड को सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही लॉक कर सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ प्राइस. तो वो उसको मेजर करने के बाद उसको लॉक करते हैं और देन बीइंग ए मेंबर ऑफ द कमेटी उनकी वो रिजर्व प्राइस जो है उनके सामने रखी जाती है. और फिर अगेन अगला प्रोसेस फिर सेम है, यानी मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ट्रीज के लिए ऑक्शन कमेटी उसी तरह बनेगी, उसी तरह आइडेंटिफिकेशन होगी. रिजर्व प्राइस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐड हो जाएगा, कमेटी का मेंबर बन जाएगा और जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा फिर दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा. उसी तरह डबल अटेंडेंस शीट्स बनेगी, उसी तरह वेंडर्स को पर्सनली आप जाके बताएंगे कि आए जी आप हमारे दरख्त लेके जाएं, हम बेच रहे हैं. उसी तरह वो आएंगे, राब्ता करेंगे, उसी तरह मीटिंग अटेंड करेंगे, उसी तरह फिर वो 1 2 3 होगा, बोली होगी, रेट कॉल किए जाएंगे, वो सारा प्रोसेस सेम होगा. बट one addition is the input of the forest department as member and then disposal of the trees in the
प्रेजेंस ऑफ द मेंबर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कि वो फिर आपको बताएगा कि अब आप इनको भिजवा दें, आप इनको निकाल के ले जाए। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब वो ट्रीज को अपरूट कर रहे होते हैं, रिमूव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो बाजुकात हमारी बाउंड्री वाल के साथ होते हैं, वो बाउंड्री वाल को नुकसान पहुंचता है, या किसी बिल्डिंग के करीब होते हैं उसको नुकसान पहुंचता है, या जब वो काट के गिरा रहे होते हैं किसी चीज के ऊपर गिरने का प्रॉब्लम होता है। उस वक्त एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि एक तो वो ये काम छुट्टी वाले दिन करवाया जाए, या गर्मियों की छुट्टियां हो तो और ही बेहतर बात है, क्योंकि उनको 2-3 दिन लग जाते हैं। छुट्टी हो, वहां पे स्टूडेंट्स मौजूद ना हो, और उसके बाद ये है कि प्रॉपर उसकी जो जो तरीका कार है उसको अप्रूव करने का वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि वो जब ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, हम भी सुकून में चले जाते हैं कि जी हमारे ट्रीज बिक गए हैं। वो भी अपना को मजदूर भेज देते हैं, कोई आम 2-3 लोग भेज देते हैं जो अपनी मर्जी से कभी इधर कुल्हाड़ा चलाते हैं, कभी इधर कुल्हाड़ा चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो भी उस एक्शन कमेटी या सीनियर मेंबर या एनी मेंबर ऑफ द कॉलेज को यहाँ कोई इतना वो नहीं है कि जी आप जरूरी है कि एक्शन कमेटी के सीनियर मेंबर ही खड़े हों, बट एनी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द कॉलेज विल सुपरवाइज द अपरूटिंग प्रोसेस ऑफ द ट्रीज, क्योंकि अदरवाइज वो कहीं भी कोई डैमेज हो सकता है, मैंने ये देखा है। और फिर कॉलेज प्रिंसिपल्स बेचारों को मैंने इंक्वायरियां भुगतते भी देखा है कि जी आपने दरख्त निकलवाया, आपकी दीवार गिर गई, तो दीवार कैसे गिरी, फिर आप बड़ी देर उसका जवाब देते रहे, ठीक है। या किसी खुदा न खास्ता साइकिल स्टैंड के ऊपर गिर गया और वहां पे कोई मोटर बाइक्स डैमेज हो गए और लोगों की कंप्लेंट्स आ गई कि जनाब इन्होंने दरख्त गिरा दिया, ये कर दिया वगैरह वगैरह। सो इसकी सुपरविजन भी उसी तरह ही है, जैसे आप आइटम्स को शिफ्ट कर रहे थे तो आप केयरफुली देख रहे थे कि वो वही आइटम लेके जा रहा है जिनकी उसने बोली दी थी, बाकी कोई कॉलेज की प्रॉपर्टी को वो जो है वो हाथ नहीं लगा रहा। सो अगेन सुपरविजन एंड रेगुलर सुपरविजन and supervision by a responsible officer is required in this case again. The next is transport. बसेस होती हैं कॉलेजेस में मोस्टली, कहीं कुछ शायद वैन्स भी हों, और ट्रैक्टर ट्राली भी बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, वो भी मौजूद होता है। और कहीं भी हो सकता है कोई कार भी किसी जमाने में मिल गई हो, या कोई जीप वीप भी हो। आई डोंट थिंक सो कैसा हो, लेकिन आई थिंक शायद कहीं हो। बट एनी हो, ट्रांसपोर्ट, for that purpose, first step is that principal will write a letter to the Transport Department of Government of Punjab, as he wrote a letter to the Forest Department for trees. For these vehicles, Transport Department is the main office. They will reserve the base price of the transport. For that purpose, they need two important documents. One, logbooks of that vehicle and registration record of that vehicle. These two documents are mandatory to provide to the transport department. Otherwise, they will reply you that your documents are not available and we can't reserve the base price. तो आप मुसीबत में रहेंगे, कॉलेज की बस वहाँ खराब होती रहेगी, वहाँ पड़ी रह जाएगी जो अच्छी खासे पैसे में बिक सकती है, या कोई और हमारा व्हीकल वहाँ पड़ा रह जाएगा। सो जब ये हम करते हैं तो यहाँ मैं एक बात क्या बताना चाहता हूँ बुनियादी तौर पर, वो ये है, तमाम आप माशाल्लाह जब यहाँ से आपने इस वक्त भी मोस्टली आप में से लोग प्रिंसिपल होंगे या वाइस प्रिंसिपल होंगे या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे, और बाद में भी आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाना है। तो अगर कोई ईंटों पे खड़ी है ट्रांसपोर्ट की, हमारा कोई व्हीकल खड़ा हुआ है, तो ये मत समझिए कि इसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होना। उसका रिकॉर्ड रखिए, उसका रिकॉर्ड ढूंढिए। आपके जमाने में एक्शन हो या ना हो, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, लॉग बुक्स होनी चाहिए। जब वो अनसर्विसेबल हुई, 3 साल पहले अनसर्विसेबल हुई, तो 3 साल पहले की लॉग बुक होनी चाहिए। जब वो चलती थी उसकी लॉग बुक्स थी। हमारे लोग वो फेंक देते हैं कि जी ये गाड़ी तो खराब है, इसके डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नीड्स दीज टू डॉक्यूमेंट्स, अदरवाइज दे विल नॉट कोऑपरेट, और वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप एक्शन नहीं कर सकते। Second is registration record of the vehicle. So you uh, have to provide the copies of these two documents. One that is logbooks, and then the registration record to the transport. Then the visit of team of the transport department will be decided by the said department, and then they will reserve the base price of that uh, uh, vehicle. And likewise, the forest department, transport department will be the member of that process.
इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैंने एंड पे लिखी हुई है, दैट इज एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। याद रखिए, गाड़ियों की फरोख्त के लिए इश्तिहार देना जरूरी है, ट्रीज के लिए भी जरूरी नहीं है। दे दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं देंगे तो पकड़ेगा कोई नहीं। प्रोसेस देखेंगे लेकिन एडवर्टीजमेंट में प्रॉब्लम नहीं लाएंगे, बट फॉर ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम होगा। पहली बात ऑडिट वाला ये कहेगा कि आपने नीलाम आम का इश्तिहार कहाँ दिया था, और वो अखबार दिखाएं, अखबार की कटिंग दिखाएं। तो अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन पे आता हूँ, तो फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आपको एक फाइल प्रिपेयर करनी है, और अगर आपने मेरे साथ वो फाइल को याद रखा और कहीं अगर आपने उसको अपनी मेमोरी में सेव कर लिया या रिकॉर्ड कर लिया, तो वो बहुत आसानी होगी अगर आपको कभी ऑडिट कराना पड़ेगा। ऑडिट में आपको मुश्किलात नहीं आएंगी। तो एनी हाउ, so transport department will you can say prepare a base price of this vehicle. They will also attend the meeting of the disposal committee, and for this purpose we have to advertise the required number of items along with their condition, model, और फिर हम बताएंगे कि कौन सी डेट। आपको पता है कि नीलाम आम के इश्तिहार में ये भी लिखा जाता है कि कौन सी तारीख को कितने से कितने बजे तक आके आप हमारे ये आइटम्स या व्हीकल्स देख सकते हैं। तो आपको उस जो आपने देखे होंगे इश्तिहार, उन इश्तिहार में दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं चले बता ही देता हूँ। पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपके आइटम्स की तादाद, और आप उसमें लिखते हैं कि जैसे हैं की बुनियाद पर, ये जरूर लिखा जाता है। आप उनको रिपेयर करा के नहीं देते, आप उनको ठीक करा के नहीं देते, जैसे हैं ये लिखा जाता है कि जिस हालत में वो पड़े हैं उसी तरह मैंने बेचने हैं। गाड़ी ईंटों पे खड़ी है, आपने उठा के लेके जानी है, मैंने ईंटों से नीचे नहीं उतारनी, या आपने उतारनी है, वहां ईंटों पे खड़ी है, देख लें। सो जैसे है और जहां है की बुनियाद के ऊपर ऑक्शन की जाती है। तो इसलिए ये जब आप ट्रांसपोर्ट के लिए ऐड तैयार करते हैं तो एक नंबर ऑफ आइटम्स और उनकी मेक, मॉडल, नंबर्स, और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये कहाँ मौजूद है, एड्रेस क्या है आपका, किस जगह पे अवेलेबल है, और तीसरी बात इनको कब देखा जा सकता है। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो कोई भी जो आप टेंडर नोटिस देते हैं या कोई भी आप अपना अखबार में इश्तिहार देते हैं, याद रखिएगा कि वो मिनिमम जो है वो 15 डेज का टाइम देना जरूरी होता है, चाहे वो रिक्रूटमेंट के लिए है, चाहे वो परचेज के लिए है, चाहे वो ऑक्शन के लिए। तो 15 डेज टाइम दिया जाता है इन दैट एडवर्टाइजमेंट। सो वो भी याद रखिएगा कि 15 दिन मुकम्मल हो फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, याद रखिएगा। तो इसलिए 2-3 दिन ऊपर डाल, फॉर एग्जाम्पल आज अखबार में आप आज भिजवा रहे हैं तो 1-2 दिन अखबार को दे दीजिएगा, यानी आपने 20 तारीख रखी है तो आप कम से कम आपके 15 दिन के लिए 5 दिन ऊपर होने चाहिए, ताकि आप 2-4 दिन रास्ते में प्रोसेस में लग जाते हैं। तो पब्लिकेशन से लेकर आगे तक 15 दिन पूरे होने चाहिए इश्तिहार में। इश्तिहार 15 को छपेगा, सॉरी, इश्तिहार जो है वो 5 को छपेगा, तो 20 तारीख के 15 दिन पूरे होंगे। उसको 5 को छप जाना चाहिए। अगर वो 6 को छपेगा तो फिर 19 दिन, सॉरी फिर 14 दिन है, तो फिर 14 दिन पे ऑडिट ऑब्जेक्शन है। आजकल याद रखिएगा, आजकल आपके इश्तिहार के ऊपर फौरन आपको पेपरा की तरफ से लेटर आ जाता है, क्योंकि वो सारे इश्तिहार ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारे इश्तिहारों को देख रहे हैं। जिस इश्तिहार के अंदर आपने कोई वायलेशन की होती है, फौरन उनका लेटर आ जाता है और वो कहते हैं कि सारा स्क्रैप करें अपना प्रोसेस और नए सिरे से करें, आपने वायलेशन की। इमीडिएटली उनका बहुत विजिलेंट है आजकल, और उनका फौरन लेटर आ जाता है। तो वो लेटर भी जाहिर है और उसकी कॉपी वो आपके डिपार्टमेंट को भी कर देते हैं। सो फॉर एडवर्टाइजमेंट वी हैव टू see some basic facts. 15 days, printing in the minimum 2 newspapers, 3 address, 4 detail of items along with make, model and further detail, and 5th when these items can be observed and what would be the timeline or schedule for the visit of the vendors. जब ये आपने कर लिया ट्रांसपोर्ट के लिए, प्राइस रिजर्व हो गई, तो अब आप ज़हन में रखिएगा कि
वो इसमें एक और भी चेंज है, वो ये है कि जो रिजर्व बेस प्राइस है वो ड्यूरिंग विजिट ऑफ वेंडर्स को नहीं बताई जाती। ट्रीज में भी बताई जाती है, बाकी आइटम्स में भी बताई जाती है कि हमने ये रिजर्व प्राइस किया है, आप देख लें, अगर आप समझते हैं इट इज फीजिबल फॉर यू, यू कैन पार्टिसिपेट, इफ इट इज नॉट फीजिबल, ओके। फॉर ट्रांसपोर्ट रिजर्व प्राइस शेयर नहीं की जाती एट द टाइम ऑफ विजिट ऑफ वेंडर्स, ये डिस्क्लोज की जाती है जब मीटिंग होती है, जब डिस्पोजल कमेटी अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट करती है आफ्टर अटेंडेंस ऑफ the members as well as the vendors, then the process will be initiated and the head of the committee announce the base price. और जाहिर है कि वो इन कंसल्टेशन विद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिजर्व प्राइस रखी गई होती है, उस वक्त बताई जाती है मीटिंग में कि इस आइटम्स की, सॉरी इस व्हीकल का ये हमने जो है इसका रेट जो है वो मुकर्रर किया है, दिस इज द बेस प्राइस। बेस प्राइस से नीचे कोई भी आदमी अपना ऑफर नहीं दे सकता, सब ने उसको प्लस करके बताना, चाहे वो 500 प्लस करे या 1000 प्लस करे, बट दैट इज ए बेस लाइन, और जो बेस प्राइस है उसको आपने लेके आगे बढ़ना है। सो फॉर ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट द प्रोसीजर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर आइटम्स, but this is in addition to the already available procedure. This is in addition to the already responsibilities of the auction committee. तमाम वो काम कंप्लीट करने के बाद इसको भी इन एडिशन टू दैट करेगा, तो तब आप ट्रीज और ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्शन में जो है वो प्रॉपर कर पाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मैंने और भी ऑब्जर्व की, जितना हमारी सर्विस हो गई हुई है और जितने कॉलेजेस को हमने क्लोजली ऑब्जर्व की है, कि मोस्टली प्रिंसिपल इस काम में पढ़ते ही नहीं है, वो कहते हैं जी पढ़ा रहे, मेरा साल रहता है, कोई कहता है मेरा 2 साल रहता है, तो मैंने क्या ऑक्शन करना। ठीक है, उसका टाइम तो गुजर जाता है, वो चला जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ परफॉर्मेंस ऑडिट नहीं होता हमारा और उस तरह से नहीं देखा जाता चीजों को, तो इस वजह से हमें इज्जत एहतराम के साथ रिटायर कर दिया जाता है और हमें नहीं पूछा जाता कि भाई आपने अपने दौर में कॉलेज में बच्चे तो पढ़ते रहे, लेकिन आपने और भी बहुत सारे काम करने थे, तो वो जो और बहुत सारे काम थे उनमें ये भी एक काम था, आपने किया कि नहीं किया। तो चूंकि वो नहीं पूछा जाता और उसका कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, केपीआईज भी ऐसा सच नहीं है, सो हम हंसी खुशी वहां से चले जाते हैं। बट मॉरली इट इज आवर ड्यूटी, legally it is our duty, professionally it is our duty to auction the unserviced items. आपने गवर्नमेंट की अर्निंग को रोका हुआ है, समझे, आप कौमी खजाने में 2 लाख 4 लाख 50,000 80,000 90,000 डाल सकते थे, आपने नहीं डाला, आपने वो दरख्त गलने दिए, आपने वो जो आइटम्स थे वो पड़े रहने दिए, और आपको पता है वो जितने पुराने होते जाएंगे उतना रेट कम होता जाएगा, जितनी को बेहतर हालत के होंगे तभी कोई खरीदेगा। जब वो गल के मेरी बस जो है वो जमीन पे गिर जाएगी, उस वक्त कौन खरीदेगा उसको? जब उसकी बॉडी इस हालत में होगी कि कहीं यूज हो सके, कहीं उसके जो बाकी उसके जो आइटम्स हैं कहीं यूज हो सके, तभी कोई खरीदने आएगा। जब वो गिर के जमीन पे पड़ी होगी तो फिर तो कोई खरीदने नहीं आएगा ना, और अगर कोई आएगा तो यही कहेगा 500 रुपए की दे दे मुझे, 1000 रुपए की बस दे दे। तो बात यह है कि इट इज माई ड्यूटी, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, यू आर द सीनियर मोस्ट लॉट ऑफ एचईडी, जहां जहां आप अवेलेबल हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ अनसर्विसेबल आइटम्स एंड डिस्पोज ऑफ दोज आइटम्स। कोई फियर नहीं है गवर्नमेंट में, याद रखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ, जब कभी भी आपसे इंटरेक्शन होगा या होता होगा, पहले भी शायद कुछ दोस्तों से हुआ हो डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस में, ये डरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने हैं, सिर्फ आपको प्रोसीजर कंप्लीट करना है, प्रोसीजर इज लेड डाउन, यू कैन डिस्कस इट विद एनी पर्सन, आप मेरे से बात कर लेंगे, जितना मुझे पता है मैं बता दूंगा, फाइनेंस वाले गाइड कर देंगे, डीपी ऑफिस से कोई गाइडेंस मिल जाएगी, डायरेक्टर ऑफिस से मिल जाएगी, कोई और आदमी बता देगा, कोई सीनियर प्रिंसिपल बता देगा, एनीवन कैन गाइड। और फिर आप वो प्रोसीजर को कंप्लीट करने से पहले किसी को कोऑप्टेड मेंबर रख सकते हैं, किसी को आप बुला सकते हैं, और सीनियर प्रिंसिपल किसी को बुला लीजिएगा कोऑप्टेड मेंबर के तौर पर, और उनको चाय शाय पिलाएं, गपशप लगाएं, वो आपकी हेल्प कर देगा। और कुछ लोग होंगे, कोई क्लरिकल स्टाफ में लोग रिटायर हो गए होते हैं जिनका बहुत तजर्बा होता है, वो आपको असिस्ट कर देंगे
फॉर्म को रिक्वेस्ट कर लें, किसी को भी कह लें, बट मेक अ लिस्ट एंड डिस्पोज ऑफ दीज आइटम्स, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी करके कौमी खजाने में जानी चाहिए। और साथ ही आप दूसरा काम जो इंपॉर्टेंट कर रहे हैं वो ये है, मैं डॉक्यूमेंटेशन पे पहुंचने से पहले ये बात करना चाहता हूँ, दूसरा काम आप ये कर रहे हैं कि आप सोसाइटी में बिजनेस को भी प्रमोट कर रहे हैं। जब आप ये आइटम्स बेचते हैं, जो आपसे खरीद के लेके जाता है वो आगे फर्दर उनको फिर बेचता है ठीक करके। तो एक आपने बिजनेस प्रमोट किया है, एक आपने गवर्नमेंट को अर्निंग करके दी है। इन एनी केस ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है, एक लीगल एक्टिविटी है। वी हैव टू कंप्लीट द कोड ऑफ सर फॉर्मेट्स। आइए, यस यस प्लीज। सर 20 मिनट्स और लेफ्ट सर, अगर आप कहते हैं तो माइक ऑन कर देता हूँ, क्वेश्चन आंसर करने हैं तो आपने। give me 2 to 3 minutes, give me 2 to 3 minutes. ओके सर, ओके। The next is documentation for audit purpose. This is the last slide, and then we will discuss your questions and your observations. For documentation, please, each and every document should be available. Take a one file, one folder of the file, and place all these documents one by one. Notifications of the committees, attendance sheets, minutes of the meetings, copy of advertisement, video record should be available in the college. Pictorial images should be the part of file. Dead stock registered is important to require to be built. ये आपको पता है कि एक स्टॉक रजिस्टर होता है और एक डेड स्टॉक रजिस्टर होता है। कॉलेजेस में ये मौजूद होते हैं। डेड स्टॉक रजिस्टर वही होता है जो आइटम्स आपने वो बनाए थे जो ऑक्शन में, क्योंकि डेड स्टॉक रजिस्टर ये होता है कि आप रोजाना ऑक्शन नहीं कर रहे होते, लेकिन डेड स्टॉक रजिस्टर में एंटर कर रहे होते हैं कि इतनी चेयर्स टूट गई हैं, स्टोर में फेंक दी गई हैं, ये फोटो स्टेट खराब हो गई है, डेड स्टॉक रजिस्टर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि आप स्टॉक से उसको माइनस करते हैं और डेड स्टॉक रजिस्टर पे उसको एंटर करते हैं, ताकि आपका जो सर्विसेबल स्टॉक है वो अलहदा ऑडिट होता है और अनसर्विसेबल अलहदा होता है। बाज़ औक़ात आपका स्टोर ओपन करके भी ऑडिट वाला देखता है कि कहाँ आपके टायर रखे हुए हैं, आप कह रहे हैं जी टायर पड़े हुए हैं, बैटरियां पड़ी हुई हैं गाड़ी के, आपने बिल दिखाया कि जी मैंने बस के जो है वो 1 लाख के टायर डाले हैं, तो वो कहता है ठीक है ये तुम्हारा बिल मैं ओके करता हूँ, बट जो टायर उतारे हैं वो कहाँ गए? आप कहते हैं जी पड़े हैं स्टोर में, वो देखने के लिए चला जाता है। आप कहते हैं मैंने बैटरी चेंज की है, वो कहते हैं जी दिखाएं पुरानी बैटरी कहाँ है। अगर आपने उसको बेची है तो आप बताते हैं कि जी ये देखें मैंने ऑक्शन किया है, उसमें ये 4 टायर भी शामिल थे बस के, ये देख लें आइटम नंबर फलां पे पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह। सो यू हैव टू वेरीफाई, you have to provide the documents for verification to the audit purpose. So pictorial images, dead stock register is required to be prepared, detail of items separate list, फर्नीचर की अलहदा बनानी है, प्लांट एंड मशीनरी की अलहदा बनानी है, आईटी की अलहदा बनानी है। डिपॉजिट स्लिप होनी चाहिए, जो आपने बैंक में पैसे जमा कराए थे वो स्लिप जरूर मौजूद होनी चाहिए, वो उस फाइल का हिस्सा होना चाहिए, वो रिकॉर्ड है कि आपने सरकार में पैसे जमा कराए। मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा होगा कि मैसर्स फुलां या मोहम्मद यासीन जो था, मिस्टर मोहम्मद यासीन जो था, उसने हाईएस्ट बिड दी थी और उसने 1,40,000 की बिड दी थी। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ये सारों ने साइन किए हैं, ये 1,40,000 का कैश है जो डिपॉजिट स्लिप पे फलां बैंक में जमा करा दिया गया है। ठीक है। सेफ्टी ऑफ रिकॉर्ड टिल कंडक्ट ऑफ ऑडिट, ऑडिट तक इस रिकॉर्ड को प्रॉपरली संभाल के रखें। रिपोर्ट टू हायर ऑफिसर्स, जब आप अपनी ऑक्शन कंप्लीट कर लें तो एक लेटर ड्राफ्ट करें, दिस इज योर परफॉर्मेंस, दिस इज योर रिपोर्ट, दिस इज अपडेशन ऑफ द यू कैन से रिकॉर्ड of your college, inform to the director office, inform to the DPA office that we have completed the auction process, this was the list of items, amount has been deposited in the government treasury and we have completed the auction process, and we will next start this process after a 2 year or a 1 year as and when the items will be available. So ये एक डॉक्यूमेंटेशन की फाइल, तो ये डॉक्यूमेंटेशन की जो फाइल है काइंडली अगर इसके ऊपर आपने तवज्जो कर ली और इसको प्रॉपरली मेंटेन कर लिया, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब ये कंप्लीट हो जाए फाइल तो इसकी एक फोटोकॉपी आप अपने पास अपनी ड्रॉ में प्रिंसिपल ऑफिस में या अपने घर पे रख लें, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिकॉर्ड है उसकी कॉपी जरूर करवाएं। ओरिजिनल गुम हो सकता है, चाय गिर सकती है, पानी गिर सकता है, उसको टर्माइट लग सकती है, खुदा न खासा कॉलेज में आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि कहाँ गया डॉक्यूमेंट, तो आप कहेंगे जी दिखाएं आपका डॉक्यूमेंट नहीं है। वो उसने ऑडिट पैरा सिर्फ इतना ही बना देना है कि वेयर अबाउट्स आर नॉट अवेलेबल,
रिकॉर्ड इज नॉट प्रोड्यूस टू द ऑडिट टीम, ये लिख के वो चला जाएगा और आप लटकते रहेंगे, आप ऑडिट अपना वो करवाते रहेंगे। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो रिकॉर्ड है उसको जरूर काइंडली ज्यादा सेव किया करें। सारा रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द ऑडिट टीम ने इसको देखना होता है। काइंडली जरा माइक ओपन कर दीजिए ताकि हम क्वेश्चंस ले लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैडम। सर मैं डॉक्टर अनली बोल रही हूँ, प्रिंसिपल हूँ पीर महल कॉलेज में। जी मैडम प्लीज। सर जी मेरे ना 2-3 क्वेश्चंस हैं तो छोटे छोटे, हाँ ना में भी आप जवाब दे सकते हैं। जी जी प्लीज सर प्लीज एक प्लीज। तो मैंने आपसे ये पूछना है कि हमारे पास जो मैं अभी 2020 में लाहौर से आई हूँ यहाँ पीर महल में ना, दिसंबर 20 में। जी तो जी मेरे मैडम। मेरे आने के बाद भी जब आंधियां वगैरह आई तो कुछ दरख्त गिरे, कुछ पहले से भी पड़े हुए थे। और आपने बहुत जी प्यारी बात की थे, प्रिंसिपल्स कहते हैं कि मेरे 2-4 साल रह गए हैं तो मैं अपने जी 2-4 साल गुजार के जाऊं। इस कॉलेज में यही कुछ ही होता जाता रहा। तो अब वो जी दरख्त पड़े हुए हैं तो मैं उनको ऑक्शन करवाने की बजाय उनको कॉलेज काउंसिल से पूछ के या जो भी आप कमेटी बताएंगे तो उसको कोई अगर फर्नीचर बन सकता है, स्टूडेंट चेयर्स नहीं है, वो नहीं हम बनवा सकते? मैडम उसका पूरा प्रोसीजर है। पहले तो जी वो फिर ये है कि जी आपको जब आप फर्नीचर बनाएंगे तो फिर फर्नीचर की आप उनको पेमेंट करेंगे बनाने की, ठीक है ना जी। वो ज्यादा तो वो महंगा जब आप पड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक वो पेमेंट करेंगे, अच्छा वो पेमेंट किस हेड से करेंगे? जी जी जब उसी में आपको से कर रिपेयर, देंगे जी जो आप कहते हैं जी मैंने वो, फर्नीचर बनाएगा। हाँ जी आप कुछ कुछ ट्रीज आप बेचेंगे और कुछ ट्रीज से कराएंगे, ये काम करेंगे। तो जी फॉरेस्ट जी डिपार्टमेंट हाँ वाले से एग्री नहीं करें, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले से एग्री नहीं करें, क्योंकि जब भी ठीक आप है, नहीं करेंगे, उनको करना ही नहीं सर, बस ठीक है। सर अब अगला वो क्वेश्चन। जब भी आप उनको सर इस डिस्पोज ऑफ करना चाहेंगे ना, चाहे आप फर्नीचर जी बनाना जी चाहते हैं या चाहे आप जो भी, तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाना है, तो वो एग्री नहीं करेंगे। सर तो ठीक इसलिए है, समझ आ गई। ये हम अच्छा सर बाज़ एक औक़ात, और। मैं एक सिर्फ बात, जी एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैं आपके सवाल पे आता हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन चूंकि मैं एचईडी में बहुत ज्यादा रहा हूँ, मैं खुद भी एचईडी का पार्ट हूँ, तो मुझे एचईडी के इश्यूज काफी इस तरह से मालूम भी हैं। तो एक प्रिंसिपल, मुझे मैं नाम नहीं बताना चाहता, ग्रेड 20 की ऑफिसर थी, उसकी कॉलेज की दीवार गिर गई और वो फीमेल कॉलेज था, और उस खातून ने हिम्मत की और बेचारी ने, और वहाँ टेंट वेंट लगाने की बजाय मार्केट से लोग पकड़े और फटाफट वहां पे दीवार बना दी। वो 3 साल की इंक्वायरी भुगतती रही है कि जी आपको किसने कहा था दीवार बनाने की, दीवार तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले बनाते हैं, आपने कैसे दीवार बना दी? हम्म, किसी ने नहीं देखा सही कि बात। उसने क्या किया है। अब कोई नहीं देखेगा कि जी आपने कॉलेज की 4 कुर्सियां और बना ली हैं, सब ये देखेंगे आपने प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया। सो डू जी जी ठीक है as सर। as per rules, so as per rules हम्म। you have to go to the forest department, they will dispose of the trees. Next. अच्छा सर एक और। सर हॉस्ट यहाँ पे कॉलेज में बने 98 में कॉलेज बना था, हॉस्टल बिल्डिंग बनी है, उसमें चारपाइयाँ बच्चों के लिए कोई 40-50 के 60-70 चारपाई जो है ना वो आई। Okay. हॉस्टल बना ही नहीं। वो चारपाइयाँ सर कुछ गल सड़ गई हुई हैं, इसी तरह टूटी फूटी पड़ी हैं, हम उनको ऑप्शन कर सकते हैं? हाँ जी उनको एक्शन कर, बिल्कुल कर। जी पूरा कर रिकॉर्ड सकते बनाएं हैं। और उस रिकॉर्ड, जी कर सकते हैं, उनका रिकॉर्ड बनाएं और उसकी रिपोर्ट यहीं से स्टार्ट होगी कि ये हॉस्टल पर्पस के लिए आई थी लेकिन हॉस्टल नहीं बना, व्हाट्सएवर द रीजन इज, आपको रीजन पता होगा, नहीं बन पाया, लिहाजा ये पहले डिलीवर हो गई, अब ये जाया हो गई है, यहाँ कोई हॉस्टल नहीं है, अब हम इनको ऑक्शन के लिए कर रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है वो अच्छा ऑक्शन सर। कमेटी पूरी रिपोर्ट रिपोर्ट सर बनाएगी। जी सवाल तो बहुत ज्यादा है लेकिन और लोगों को भी मौका देना है। आखिरी एक और क्वेश्चन है। सर जब कॉलेज बना बस मिली हमें, लेकिन बच्चे इधर के जी बस पे नहीं जाते थे, यानी ये काफी रिमोट एरिया था उस वक्त, अब कुछ बेहतर हो गया है। तो इन्होंने बस जी ना यहाँ से पीर महल से रजाना कॉलेज में दे दी। वो जी 15-20 साल वहीं पे रही। जब मैं आई जी तो मुझे जोर डाला गया कि वापस बस मंगवाओ मंगवाओ मंगवाओ। सर मैंने ना वो बस वापस ले ली थ्रू प्रॉपर चैनल। अब वो ओके बस आए हुए को 6-7-8 माह हो गए हैं, मेरे स्टूडेंट्स फिर भी बस पे नहीं जाते। उसके टायर भी ओके गले पड़े हैं, वैसे भी उन्होंने सर सारी तोड़ फोड़ के गली सड़ी बस दी। रोजाना वालों को नई बस मिल गई और अब वो बिल्कुल रूइंड फॉर्म में बस खड़ी है। तो इसको मैं इस तरह अब इसको ऑक्शन करवा सकती हूँ बस को? जी सर मैडम, बच्चे जाते ही नहीं है। मैडम मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि आपकी बात दुरुस्त है, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप वापस लाना चाह रहे थे तो उस वक्त एक थोड़ा सा अगर आप उसका बेस वर्क कर लेते, लोगों से पूछ लेते सर कि उस आपने वक्त जाना है। किया। सर उस जी वक्त भी किया, बहुत किया, लेकिन एनी ना हाउ बहरहाल, मुझे एनी जोर हाउ ये हम दिया बहस गया में नहीं वापस। पड़ते, एनी हाउ हम बहस में नहीं पड़ते, लेकिन एनी हाउ आपको वापस लेते हुए पहले अगर आपको कर लेते, और यकीनन आपने किया भी होगा, बट अब ये है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को लिखें, दे विल विजिट
they will visit, they will observe the bus and then they will decide किसकी ऑक्शन कर देनी है। Okay. और अगर वो सर्विसेबल है और उसकी रिपेयर हो सकती है, बट इसके लिए आप डायरेक्टर कॉलेजेस को भी बता दें, हो सकता है कि कुछ उसमें पैसे लगा के किसी और नीडी कॉलेज को वो मिल जाए, आप फिर शिफ्ट कर दें, किसी नीडी कॉलेज में चली जाए, वहां तक। ठीक है, डायरेक्टर कॉलेज को सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। जी नेक्स्ट प्लीज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पार्टिसिपेंट्स आपके माइक अलाउ है, प्लीज अपने माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। माइक अलाउ है, प्लीज जी वालेकुम माइक अनम्यूट कर सलाम। लीजिएगा। सर तनवीर असगर बात कर रहा हूँ हसन अब्दाल कॉलेज से। जी सर। मैं कोई इंटरनेट प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा सा कुछ 10-15 मिनट लेट ज्वाइन किए, तो मुझे ये थोड़ा सा गाइड कर दें कि जब भी ऑक्शन करेंगे तो अपनी हायर अथॉरिटी से पहले परमिशन लेंगे क्या? कोई चैनल्स हैं हर चीज के अलग अलग, या सेम है, या नहीं लेनी, या क्या करना है? ऐसे है कि आप सर, ऐसे है कि आप एक ऑक्शन कमेटी अपनी नोटिफाई करेंगे, प्रिंसिपल साहब जो है वो नोटिफाई करेंगे। आप कैटेगरी 2 ऑफिसर हैं, यू आर ऑथोराइज टू ऑक्शन द अनसर्विसेबल आइटम्स। ठीक है, आपको ऑक्शन करने के लिए कुछ स्पेशल परमिशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने प्रोसेस पूरा अडॉप्ट करना है। आपने कमेटी नोटिफाई करनी है, जैसा मैंने अभी बताया आपको, सारी आप डिस्कशन आपने काफी सारी सुन ली होगी, और आइटम्स को सेग्रीगेट करना है जिस तरह भी है। ट्रीज और ट्रांसपोर्ट अगर शामिल है तो उसका अलग प्रोसेस मौजूद है। तो आपको ऑक्शन करने के लिए परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है सर, हमें तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि ट्रीज के लिए कम से कम सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से अलाउ करवाना पड़ता है पहले। नहीं, पहले आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाएं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको उनकी रिपोर्ट देगा, उसके बाद आप जो है वो अपनी ऑक्शन कमेटी बनाएंगे। और ये इसलिए हुआ है, जो आप फरमा रहे हैं, इसलिए हुआ है कि ट्रीज की कॉलेजेस में कंप्लेंट्स ही बहुत है। और जब आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, सेक्रेटरी ऑफिस में जाएंगे, वो भी आपको यही कहेंगे कि प्रोसेस अडॉप्ट करें, और अडॉप्ट करने की बात करें। वो प्रॉब्लम यही था सेंट्रलाइज करने का, जितना मुझे मेरा नॉलेज है, प्रॉब्लम ही यही था कि कंप्लेंट्स ही इतनी ज्यादा है कि प्रिंसिपल्स कॉलेज में ट्रीज भेज देते हैं और उनको पता नहीं होता, और बाद में प्रॉब्लम आया होता है। तो इसलिए चीजों को सेंट्रलाइज करने का मकसद ये है। अदरवाइज डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स रूल्स के तहत प्रिंसिपल इज द कैटेगरी 2 ऑफिसर। ठीक है, he or she is authorized to auction the unserviceable item. राइट सर, थैंक यू। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर डॉक्टर तबस्सुम बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रीज हैं, जब हम इनकी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो सर वो ट्रेनिंग के टाइम भी हमें सारा प्रोसीजर इसी तरह कंप्लीट करना है, या सिर्फ उनको अप्रूव करने के लिए ही कंप्लीट करना है? सर काइंडली मुझे गाइड कीजिए, थैंक यू। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, जैसे हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से साइड की दीवारों वगैरह को नुकसान पहुंचता है, हम उनकी ट्रिमिंग करवाते हैं ताकि बेहतर हो जाए ना, वो दोबारा से फिर ग्रो कर जाते हैं। तो सर क्या उसके लिए भी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी है और आप ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करना है, या जस्ट अप्रूव करने के लिए ही हमने ये काम करना है, या जो गिर गए हैं, खराब हो गए हैं, उनके लिए ही हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखकर वहां से प्रोसीजर अडॉप्ट करना है? सर काइंडली ये बताइए मुझे प्लीज। जी, ऐसे मैडम कि जब आप उनको ट्रिमिंग करते हैं, तो ट्रिमिंग करने के बाद आप एक जगह उसको इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसकी रिजर्व प्राइस दोबारा लगवाइए, और उसके लिए कोई दोबारा अलहदा से प्रोसेस करने की या वेंडर बुलाने की उस तरह से जरूरत नहीं है, वो किसी को भी बेचा जा सकता है। ठीक है, उसके लिए वो वाला प्रोसीजर नहीं है। आप रूटिंग का पूरा प्रोसीजर है, मैंने बता दिया है। जो ट्रिमिंग है, ट्रिमिंग को भी एक जगह इकट्ठा करेंगे, जी बिल्कुल, और उसको भी आपने बेचना होता है, वो भी आपने वहां रखना नहीं होता। कुछ जगहों पे ऐसा है कि जैसे कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, वहां वो यूज हो रहा है कि जी वो उसको ईंधन के लिए यूज किया जा रहा है, और कुछ जगह पे वो चौकीदार वगैरह हैं, वो ले जाते हैं, वो कहते हैं जी सर मैं घर में ले जाऊंगा वगैरह वगैरह। ये सारा अनऑफिशियल है मैडम, ये अलाउड नहीं है। अगर हमारा कोई चौकीदार, हमारा कोई नायब कासिद, या हमारे गार्ड्स अगर ले जाते हैं अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए, ये सारा हमारा अपना डिसीजन है।
दिस इज नॉट लीगली अलाउड, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ट्रीज हैं, उनका एक एक चीज की हमें जिम्मेदार है। आगे हमारी अपनी मर्जी, हम क्या डिसाइड करते हैं, बट वो जो ट्रिमिंग करने के बाद जितनी ब्रांचेस हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, फॉरेस्ट वाले को बुलाएं, वो उसकी प्राइस रिजर्व करेगा और बेच दें। वही सिक्योरिटी गार्ड खरीद ले, वही सिक्योरिटी गार्ड खरीदना चाहता है अपने घर के लिए, खरीद ले, पैसे जमा करा दे सरकार में, ठीक है। कोई और कॉलेज का एम्प्लॉय खरीदना चाहता है, खरीद ले, कॉलेज का कोई एम्प्लॉय खरीदना चाहता है, खरीद ले, बट प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कॉलेजेस की पॉलिटिक्स को मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो काइंडली वीडियो रिकॉर्ड बना लें अपना, और पिक्टोरियल अपना रिकॉर्ड बना लिया करें, ताकि आप एविडेंस दे सकें। कॉलेजेस में इंक्वायरी में प्रॉब्लम ये आता है कि आपके पास एविडेंस नहीं होते, आप अपने कागज ही नहीं प्रोड्यूस कर सकते, आपके खिलाफ कंप्लेंट आए तो लिहाजा फाइल्स बनाने के लिए ज्यादा जोर दें, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा बेहतर तरीके से करें, फाइलिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अपने एविडेंस दें और फिर रूल्स के मुताबिक बोल्डली काम करें। कोई रुकावट नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रोसीजर मुकम्मल करें। जी नेक्स्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये एक चीज है कि कॉलेज के अंदर लाइब्रेरीज में बहुत सारी बुक्स हैं, उनको दीमक लगी हुई है, खराब हो चुकी हैं, जी उनकी कैसे की जाएगी एक्शन? और ये आपसे रिकॉर्ड ले लो, एक स्टोर आइटम्स है सर, ये स्टोर आइटम्स कहलाते हैं। बाबा ले आएंगे। चलो काइंडली आप अपने माइक म्यूट कर लीजिए, जो बोल रही हैं खातून, काइंडली, या आप क्वेश्चन कीजिएगा, फिलहाल जरा काइंडली बात सुन लीजिए। ये ऐसे है कि ये स्टोर आइटम्स हैं सर, तो इन स्टोर आइटम्स को, इनको आप अकॉर्डिंगली आप उसी तरह से करेंगे जैसे वो ओल्ड बुक्स खरीदने वाले हैं, आप उनको बुलाएं और उनको भेजें। जो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए, गल सड़ गए, जैसे आप समझते हैं कि वो तो अब दीमक के साथ दीमक हो गए, तो वो तो जहरे नहीं बेचे जा सकेंगे ना, तो आप वो वाले बेचेंगे जो कुछ किसी काबिल होंगे, तो वो जितने पैसे होंगे उसका वही प्रोसीजर है। ये स्टोर आइटम है, इसकी उसी तरह एक्शन होगी जिस तरह मैंने आपको बताया है, अदर देन ट्रीज एंड प्लांट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, थैंक यू जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी वालेकुम सर, जो किताबें दीमक की वजह से खत्म हो जाती हैं, फिर उनका हम क्या करेंगे, जो सेल भी नहीं हो सकती? नहीं, क्या मतलब, कैसे खत्म हो जाती हैं? मतलब जो बेचने के भी काबिल नहीं रही, दीमक ने इतना ज्यादा उन्हें डैमेज कर दिया कि वो किसी कागज वाले के इस्तेमाल में भी नहीं आ सकती। जाहिर है मैडम, देखिए ना, उसमें बात यह है कि उसमें फिर मेरी और आपकी नेग्लिजेंस है, मैं अपने आप को शामिल कर लेता हूँ कि जब दीमक लगी थी मुझे उसको ठीक करा लेना चाहिए था, मैंने दीमक लगते हुए उसको गलने दिया ना, तो यही तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने सारी गुफ्तगू में यही रिक्वेस्ट तो की है कि मुझे विजिलेंट होना है, मैं कस्टोडियन हूं, लेकिन नहीं होता है उसको इनहेरिटेंस में मिल जाती है ना ये चीजें, तो वो फिर क्या करे? एनी हो, मैं किसी की ब्लेम नहीं लगा रहा, बट मैं सारे, चूंकि सीनियर मौजूद हैं मुझसे, सब आप लोग मुझसे भी ज्यादा चीजों को जानते हैं और मुझे गाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूँ, बल्कि ज्यादा अच्छा लग रहा है। प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा। तो काइंडली उसमें ये है कि मैडम जो बिकने के काबिल है वो बेच दें, और जो नहीं बिकने वाली वो दीमक के साथ दीमक होगी। पिछले सवाल में भी मैंने यही जो डाई करवाना था ना, उसका रंग खराब होना था, उनका तो रिकॉर्ड ही खराब नहीं होगा। मेरा बहुत बट्टा भी साथ रखते हैं। कंप्यूटर एक्सेसरीज किस चीज में आती हैं, किस कैटेगरी में आती हैं? सर, ये गुज़श्ता दिनों एक लेक्चर हमने अटेंड किया था और उसमें एक प्रिंसिपल साहब ने ये कहा था, जैसे आपने ये सारा प्रोसीजर बताया, ये बज़ाहिर बहुत सिंपल और आसान लग रहा है, तो उन्होंने कहा था कोई रद्दी का किसी का रिकॉर्ड बता रहे थे कि ये मेरे लिए इंतहाई इम्पॉसिबल हुआ उसको डिस्पोज ऑफ करना, और वो आज तक नहीं हो सका, और कई सालों का दौरानिया उन्होंने बताया जिसमें वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सके। एक तो ये क्वेश्चन है, उसने कोई रीजन बताया? मेरे ख्याल में यही कोई दफ्तरी कार्रवाइयों की वजह से ही शायद कोई बता रहे थे। आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा कह रहे थे, यही मैं क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि बज़ाहिर तो ये सारा प्रोसेस इतना मुश्किल भी नहीं दिखाई दे रहा और बड़ा शफाफ है, तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं इसमें? क्या ये तो मैडम वो केस टू केस, हाँ क्या आ सकती है डोंट नो, बट लेकिन ये है कि वो केस टू केस देखा जा सकता है। आप डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स की बुक खोलिए, रूल 12 पढ़ लीजिए, आधे सफे के ऊपर रूल है, बहुत छोटा सा रूल है, वो आधे सफे पे मेरे ख्याल 3 मिनट भी, शायद मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म हो जाता है, उसी में सारा एक्शन का लिखा हुआ है, तो लिहाजा कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल ये मेरी प्रोसीजर आपके सामने मैंने बता भी दिया है, इसके बाद भी हम अवेलेबल हैं, अगर कोई फोन पे हमसे डिस्कस करना चाहेगा, आई एम अवेलेबल फॉर दैट।
तो ये कोई जी, इशू सर, नहीं है, और प्रोसीजर कंप्लीट कीजिए। अगर वो साहब किसी वक्त राब्ते में हो और मेरे से बात कर लें तो शायद उनको भी कुछ सोल्यूशन बताया जा सकेगा। आई डोंट नो कि उसको क्या प्रॉब्लम आए। और दूसरी बात ये है कि फॉर द सेक ऑफ माय नॉलेज, मुझे इतना इल्म नहीं है, ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को हम बुलाते हैं, क्या ये जो कॉलेजेस में उनकी प्रेमिसेस में जो ट्रीज होते हैं ये सारे नंबर्ड होते हैं, उनको पता होता है कि फलान ट्री है? तो फिर अगर उनको नंबर ऐसा नहीं है, होते जी जी मैडम, उनको नंबर ये नंबर्ड कॉलेज ने करने होते हैं। ये हमारा प्रेमिसेस है, हमने नंबर्ड जी करने होते हैं, उन्होंने नंबर्ड नहीं करने होते। वो जब आके ऑब्जर्व करते हैं तो उसके जी बाद उन्होंने बेसिकली वो ऑथोराइज्ड हैं, क्योंकि वो उसका सारा प्रोसीजर भी समझते हैं और बेसिकली उसकी असल बात ये होती है कि उसका प्रॉपर रेट लगाए। तो रेट वही लगा सकता है जिसको मालूम है वो क्वालिटी ऑफ वुड का या इंपॉर्टेंस ऑफ वुड का। हमें तो पता नहीं है, हमारे लिए सारे दरख्त एक जैसे हैं, ठीक है, उनके लिए सारे दरख्त एक जैसे नहीं है। तो इसलिए वो उसकी क्वालिटी ऑफ वुड और इंपॉर्टेंस ऑफ वुड के मुताबिक उसका रेट मुकर्रर करते हैं, और उसकी एज के हिसाब से, उसकी लेंथ के हिसाब से, उसकी विड्थ के हिसाब से, ठीक है ना, उसका ट्रंक मेजर करते हैं बाकायदा वो। तो वो उसके बाद उसका हिसाब लगाते हैं। तो वो इसलिए वो ऑथोराइज्ड हैं। वो आते हैं, आप उनको अनसर्विसेबल, जैसा मैंने बताया कि अनसर्विसेबल का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, या ड्राई ट्रीज कह लें, या जो फॉलन ट्रीज हैं वो ट्रीज हैं, सर वाइंड अप वो कीजिएगा आपने प्लीज उनको सर। बताने, जो आपने बताना है कि ये 5 ट्रीज हैं, ये 6-8 हैं, ये आप हमने बेचने हैं, फिर वो फैसला करेंगे। तो इसलिए वो नंबर्ड आपने करने हैं, उन्होंने नहीं करने। जी सर वाइंड अप कीजिएगा प्लीज सर। जी वाइंड अप कर दूं? जी सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच जी। आई थिंक कुछ और क्वेश्चंस होंगे, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अगर कोई